टिके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु तो पिला माने आज आमे हाई कोर्ट एएसओ मेंस एग्जामिनेशन पे गोटे इंपोर्टेंट क्लास उपरे डिस्कशन करिया तो प्रीवियस क्लास आमे किसी क्वेश्चन उपरे डिस्कशन करथिले तो आज किसी क्वेश्चन एटा आपनर अछि ताको आमे मध्ये कोन आज डिस्कशन करिया तो देखिबा आपनर कोन कोन सब क्वेश्चन गुडा रहिछि तो तार आंसर गुडा कोन हबो से ऊपर डिस्कशन करिया ता बिफोर जो माने भी पेड बैच जॉइन करबा को चाहूचंती तो से माने टिके स्टडी आईक्यू एप्लिकेशन डाउनलोड करंतु तो सेटा आपनको कोर्स गुड़ाकर ऑफर अच्छी तो आप से कोर्स गुड़ा ऑफर एवेल करेंगे ओके तो जो मैंने भी इच्छुक अच्छा तो आप्लिकेसन डाउनलोड करूँ से कौन ना सब क्लास गुड़ाक पीडीएफ सहित पेड बेस गुड़ाकर क्लास गुड़ाक आ पीडीएफ गुड़ाक आपको मिल ओके तो देखा आम क्वेश्चन कौन रही डिस्कसन करवा देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छी द फेमस फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहेंजोदारो वाज मेड ऑफ जदि आम देखा मोहेंजोदारो कौन डांसिंग गर्ल फाउंड होता तो यही कही कौन ना ये डांसिंग गर्ल माने कौन तैयारी होता बोली पचार को मेटेरियल रे तैयारी होता The famous figure of a dancing girl found in the excavation of Mohenjo-daro was made up of कौन है आंसर आंसर है कौन ना ब्रोंज ब्रोंज नेक्स्ट देखो रॉक कट आर्किटेक्चर in Harpan culture context has been found at जदि हम देखिबा रॉक कट आर्किटेक्चर in Harpan culture context has been found at तो कोड आसीबो ये आंसर आसीबो कोन ना धोलावीरा नेक्स्ट देखो which rock edict of Ashoka provides a description of the horror of Kalinga war which rock edict of Ashoka provides a description of the horror of Kalinga war तो को रॉक एडिक्ट रे कलिंग वार कथा मेंशन अछि बोली कहा जाय छी कोन है आंसर आंसर आसीबो कोन ना 13th रॉक एडिक्ट 13th रॉक एडिक्ट नेक्स्ट देखो फोन नंबर देछि ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट जदि हम देखिबा बुद्धिस्ट काउंसिल हेतला कोन ना अशोका को रीजन रे तो तो अशोका को समय रे बुद्धिस्ट काउंसिल हेतला तो सेटा कोर्ट हेतला बोली पचारछि प्लेस आपन गोटे पचारछि Buddhist council during the region of Ashoka was held at आंसर आसीबो कोन ना पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र नेक्स्ट देखो रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम were built in the region of which पल्लव ruler जदि हम देखिबा रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम were built in the region of which पल्लव ruler आंसर आसीबो कोन ना नरसिंह वर्मा 1 नरसिंह वर्मा 1 बुझिला जे कि पल्लव रूलर थिले तो तांको द्वारा बिल्ड हेतिला महाबलीपुरम रथ टेम्पल नेक्स्ट तक 6 नंबर देछि द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल cut out of solid rock at Ellora was built under the patronage of which dynasty Ellora कौन आसीबो द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल cut out of solid rock at Ellora built by built under the patronage of which dynasty
तो डायनेस्टी आ सहित आसो कौन ना राष्ट्रकूट डायनेस्टी मन रखिबो राष्ट्रकूट डायनेस्टी। नेक्स्ट देखो by whom in 1923 Swaraj Party was founded ହେଲା by whom in 1923 Swaraj Party was founded। आंसर आसो कौन ना मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। ओके नेक्स्ट देखो 8 नंबर देखिए द एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइड ए मशीन विथ ए स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन हु सेड दिस। द एक्ट ऑफ 1935 provide a machine with strong brakes but no engine who said this। कौन हो परिबो आंसर आसो कौन ना जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखो द अगस्ट ऑफर ऑफ 1940 रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस वाज मेड बाय। जदि हम देखिबा 1940 जोटा कि अगस्ट ऑफर आसला याको रिजेक्ट करथिले कि ना कांग्रेस किंतु याको बनेथिले कि अगस्ट ऑफर मेड बाय। कौन आसीबो आंसर आसीबो कौन ना लॉर्ड लिनलिथ गो रखिबो लॉर्ड लिनलिथ गो। नेक्स्ट देखो 10 नंबर देछि कोन which of the acts had decided that recruitment to Indian civil services should be through a competitive examination। तो से कहिछि कोन माने को एक्ट अनुसार कोन करा गला ना जोटा कि करा गला कोन रिक्रूटमेंट टू इंडियन सिविल सर्विसेज शुड बी थ्रू ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आंसर आसीबो कोन आंसर आसीबो कोन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट देखो 11 रही in 1969 which biologist proposed five kingdom classification। In 1969 which biologist proposed five kingdom classification। कौन आसीबो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किए देथिले आंसर आसीबो कोन ना रॉबर्ट एच व्हाइटकर डब्ल्यू एच आई टी टी ए के ई आर हला व्हाइटकर। नेक्स्ट देखो आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन व्हिच ऑर्गेनेल। आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन व्हिच ऑर्गेनेल। कौन आसीबो outside the nucleus DNA is found in which organelle। आंसर आसीबो कोन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखो 13 देछि कोन sexual reproduction in algae that takes place through fusion of two similar size gametes is called। sexual reproduction in algae that takes place through fusion of two similar size gametes is called। तो तमे कोन कहबा आंसर आसीबो कोन आइसोगेमस। नेक्स्ट देखो हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किए देथिले
कौन आसो आंसर आंसर आसो कौन ना चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन नेक्स्ट देखो vertebrates belongs to which phylum vertebrates belongs to which phylum कौन है परिबो आंसर आसो कौन ना chordata नेक्स्ट देखो the cells which are responsible for the production of antibodies are तो को सेल गुडा को रेस्पोंसिबल कौन एंटीबॉडी प्रोडक्शन पे कौन है परिबो आंसर आसो कौन ना बी lymphocytes बुझिले बी lymphocytes नेक्स्ट देखो द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट्स कौन है परिबो प्लैंक कांस्टेंट पे कौन आसीबो तो आंसर आसीबो कौन ना जूल सेकेंड और जेएसएल कौन लिखिबे जूल सेकेंड बोल लिखिबे हु इज द इन्वेंटर ऑफ राडार हु इज द इन्वेंटर ऑफ राडार कौन है परिबो आंसर आसीबो कौन ना रॉबर्ट वाटसन वाट मन रखिबो रॉबर्ट वाटसन वाट नेक्स्ट देखो ऑन ए रेनी डे स्मॉल ऑयली फिल्म्स ऑन वाटर शोज ब्रिलियंट कलर दिस इज ड्यू टू तो कौन हुए माने जो ऑयल कौन हुए रेनी डे रे वाटर ऊपर पड़े तो किसी कलर देखा जाए ब्रिलियंट कलर दिस इज ड्यू माने এটা কম ही हुए बुझिला बा लाइट रो को फेनोमेनन सहित ये एसोसिएटेड कौन हो परिबो आंसर आसीबो कौन ना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ओके नेक्स्ट देखो which substance most commonly used as a food preservative which substance most commonly used as a food preservative कौन हो परिबो आंसर आसीबो कौन ना बेंजोइक एसिड तो पिला एटा आपण जदी कारण ऑप्शन भी नाही तो से अनुसार आपण जदी बेंजोइक एसिड लिखिले ओबियसली ठीक हबो किंबा सोडियम क्लोराइड बा सॉल्ट जोटा कि कोन होय क्रायो प्रिजर्वेशन रे यूज हुए सेटा भी लिखिले आपण हबो किंतु एप्रोक्स माने करेक्ट आंसर हो जाडो कोन ना बेंजोइक एसिड बुझिला नेक्स्ट देखो there is a name the process by which water can be separated from alcohol water mixture ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା या ପାଇଁ କଣ ପ୍ରୋସେସ ଆସିବ ଯୋ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା alcohol water mixture ରୁ ଆମେ water କୁ separated କରିବା ପ୍ରୋସେସ କଣ ହେଇପାରିବ आंसर आसीबो कोन ना डिस्टिलेशन नेक्स्ट देखो 22 ଦେଇଛି which river crosses tropic of capricorn twice which river crosses tropic of capricorn twice कौन आसीबो आंसर आसीबो कोन ना लिम्पोपो रिवर नेक्स्ट देखो द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन आसीबो आंसर आसीबो कोन ना
prairies. P-R-A-I-R-I-S, prairies. Next देखो, name the deepest trench of the Indian Ocean. Name the deepest trench of the Indian Ocean. कौन आसीबो? आंसर आसीबो कौन ना जाभा ट्रेंच. नेक्स्ट देखो, द गल्फ स्ट्रीम इज ए फास्ट warm ocean current in which ocean? The Gulf Stream is a fast and warm ocean current in which ocean? ये को ocean सहित related ହେଇଯିବ Gulf Stream. कौन आसीबो सर? आंसर आसीबो कौन ना Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. नेक्स्ट देखो, Sigmo festival is celebrated in which of the state? Sigmo festival को state सहित related आसीबो. आंसर आसीबो कौन? Sigmo festival. आंसर आसीबो गोवा. नेक्स्ट देखो, 27 ଦେଇଛି କଣ? If a national emergency is in place under Article 352, then the Parliament can extend the term of the Legislative Assembly for days or at a time. ଯେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଚାଲେ ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 352 ଅନୁସାରେ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଣ କରେ ନା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିର ମାନେ ଟର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରେ at a time. କଣ ଆସିବ? आंसर आसब कौन ना 1 year. नेक्स्ट देख 28 देछि ड्यूरिंग व्हिच 5 year प्लान वाज द फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली एम्फासाइज्ड. जदि हम देखिबा सेल्फ रिलायंस को 5 year प्लान सहित रिलेटेड हबो. कौन आसीबो? तो ये आसीबो कौन ना फोर्थ 5 year प्लान हला. फोर्थ 5 year प्लान. नेक्स्ट देखो व्हाट टाइप ऑफ वाटर बॉडी इज फॉर्मड व्हेन ए रिवर स्प्लिट्स इनटू several smaller channels as it approaches the sea. What type of water body is formed when a river splits into several smaller channels as it approaches the sea? तो कौन फॉर्मेशन होबो? आंसर आसीबो कोन ना डेल्टा. नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which is the final authority in the interpretation of the constitution? According to the Indian constitution which is the final authority in the interpretation of the constitution? सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट आस. नेक्स्ट देखो 31 देसी which of the article of the Indian constitution provides for the original jurisdiction of the Supreme Court over central state and interstate disputes. तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट पे आर्टिकल केते आसीबो? कोन होई परिबो? आर्टिकल केते आसीबो? आर्टिकल 131 आसीबो. नेक्स्ट देखो 32 ଦେଇଛି which article of the Indian constitution instructs the state to ensure the right to work, education and public assistance in specific circumstances.
which article of the Indian Constitution instructs the state to ensure the right to work, education and public assistance in specific circumstances? Circumstances कौन हो परिवो? तो यहाँ पे आर्टिकल कौन आसीबो? आर्टिकल आसीबो 41. नेक्स्ट देखो, which article of the constitution provides for the juridic ओहो ठीक है जुरिडिक्शन कर दे जुरिडिक्शन 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 ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है जदि हम देखा को आर्टिकल कौन करे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कथा हुए इंपोर्टाट आर्टिकल गुड़ाक मन रख कारण आप जो आर्टिकल गुड़ाक पढ़ी पढ़ी आस गुड़ाक आप रिमेम्बर करदे कि जोटा कि आप एग्जाम आसे कि इंपोर्टाट रेयर आसे कि आसे आप एग्जाम है जो क्वेश्चन आप टफ हो जाए तो ये क्वेश्चन गुड़ाक आसे तो 262 ओके नेक्स्ट देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees equality before the law देखो equality before the law इजी आर्टिकल ये कौन हो आर्टिकल 14 हो ओके नेक्स्ट देखो देखो disputes regarding the election of the president and vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final is mentioned under which article of the constitution जोटा कि कौन ना कौनसी माने व्यघात है बा कौनसी डिस्प्यूट है क्या भितर ना प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे बुझला ना कौनसी डिस्प्यूट जदि है प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे तो यार माने मत माने यार फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट हाथ रे अछि बुझला ना तो एटा को आर्टिकल मेंशन अछि बोली से आपन को पचारे तो या पे आर्टिकल कोन आसी आंसर आसीबो कोन आर्टिकल 71 नेक्स्ट देखो which day is observed as micro small and medium enterprises by MSME day every year micro small and medium enterprises MSME day every year कौन आसीबो आंसर आसीबो कहबे 27th June नेक्स्ट देखो which day is celebrated as अंत्योदय दिवस every year across the country अंत्योदय दिवस every year across the country तो केबे आसीबो ना 25th September नेक्स्ट देखो which day is observed as world cotton day वर्ल्ड कॉटन डे केबे आसीबो आंसर आसीबो कोन ना 7th October नेक्स्ट देखो पहले 39 देछि वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन व्हिच डे वर्ल्ड पोलियो डे केबे आसीबो वर्ल्ड पोलियो डे ये आसीबो कोन ना 24th October नेक्स्ट देखो व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स आंसर आसीबो कोन ना 6th January नेक्स्ट देखो द यूएन जनरल असेंबली declared which day as International Day of Zero Waste. International Day of Zero Waste. जोटा कि कौन ना यूएन जनरल असेंबली द्वारा कौन है डिक्लेयर है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट नेक्स्ट देखो हु हैज ऑथर्ड द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी
straight from the heart, an autobiography. आंसर आसब कौन ना कपिल देव. नेक्स्ट देख, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद. नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद. आंसर आसब कौन ना गोल. नेक्स्ट देख, recently the government of India signed a loan agreement with institution to consolidate and strengthen India's health system preparedness to future pandemic. कौन आसीबो? आंसर आसीबो कौन ना एशियन डेवलपमेंट बैंक. बुझिला, दैट इज एडीबी. नेक्स्ट देखो, 45 देछि recently which organization announced 750 crore agri sure fund to promote innovation in agriculture. कौन आसीबो? एग्री श्योर. आंसर आसीबो नाबार्ड. ओके, नाबार्ड. नेक्स्ट देखो, जिब्रा एंड कुसमुंडा coal mines recently seen in the news are located in which state? Zebra and Kusmunda coal mines recently seen in the news are located in which state? कौन आसीबो? आंसर आसीबो कौन ना छत्तीसगढ़. नेक्स्ट देखो, recently which ministry inaugurated the Center for Rural Enterprises Acceleration through Technology by create in Leh? आंसर आसीबो कौन ना मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. हैला, एमएसएमई. नेक्स्ट देखो, 48 देछि कोन, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिशन बा सीआईसी. प्रेजेंट चेयरपर्सन. हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिशन. आंसर आसीबो कोन ना हीरालाल समारिया. बुझिला. नेक्स्ट देखो, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेवेंथ पे कमिशन. हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेवेंथ पे कमिशन. कौन आसीबो आंसर? सेवेंथ पे कमिशन. तो मन रखिबो, आंसर आसीबो कोन ना जस्टिस अशोक कुमार. जस्टिस अशोक कुमार माथुर. नेक्स्ट देछि, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. जदि हम देखिबा प्रेजेंट डायरेक्टर बा डीजी ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. आंसर आसीबो कोन ना ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह. ओके, तो पिला माने ये थिला जे आपनरो किसी जीके रिलेटेड क्वेश्चन. तो आशा करछि आपन वीडियो भल लागिथिबो. जदि वीडियो भल लागिस ताले वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे. पुणी देखा नेक्स्ट क्लास. से पर्यंत विदाय दियंतु. जय हिंद, वंदे मातरम.